Every day, somewhere in the world, normal people risk life and limb just getting from A to B. In far-off countries and isolated, forgotten villages, our camera crews follow the journeys of those brave enough to travel on the world's toughest, most dangerous and deadly roads. Buckle up for a hell ride. This is Deadliest Journeys. The Curse Undermine is the largest and most active of the 120 mines in the region. Dunbar alone produces 28 million tonnes a year. This place is known as the coal capital of India, and it's the starting point of the coal route. Thousands of truckers constantly bomb it up and down these rough roads. It's 7 AM and we are catching a ride with this guy, Parwan, who is heading to the loading bay in the centre of the complex, 2.5 miles from the entrance of the mine. This is his wingman and assistant, Govind. They'll travel together as they transport their load of coal, 370 miles to the holy city of Banaras. लोडिंग होती है गाड़ी की, लोड करवाएंगे गाड़ी बनारस के लिए। अरे वो 1.5 घंटा के अंदर में लोडिंग हो जाती है। और लेबर लोडिंग करती है ना। Parwan knows this routine all too well and is anxious to hit the road. On some days, there could be as many as 800 trucks here, and if the loading stage goes slow, they'll end up stuck in a massive traffic jam for hours on end. Because the labour in India is so cheap, the mine owners haven't invested in machinery to load the trucks. गाड़ी में रहने लगे 3-4 साल मेहनत की है इसके बाद ड्राइवरी करने लगे इससे कम मेहनत पड़ता है मगर ये है कि मेहनत कम है मगर खटाली ज़्यादा है इसमें 24 घंटा का ड्यूटी है जब लोड हो जाएगी तो यहाँ से रास्ता में चलेंगे तो सुबह मंडी पकड़ना होगा 3 hours later, Parwan and his 16 tonnes of coal are set to leave the mine. By this time, there are hundreds of trucks in the queue to get on the road. It's a 2.5 mile stretch all of the drivers dread because of the tedious traffic and because of the grabbers, as they are locally known. People who loot the trucks and grab whatever coal they can get their hands on. कौन लोग वो बच्चा लोग कोई चोर उर है थोड़ा चेंगड़ा लोग देख रहे हैं सामने जो है कि चोरी होता है बच्चे लोग चढ़ जाते हैं तो वही रोक करके थोड़ा सा डांटना पड़ता है कभी-कभी लड़ाई भी करना पड़ जाता है क्योंकि कोई कोयला मत उतारो मेरा घट जाएगा तो पैसा कट जाएगा All the truckers stuck in the traffic jam face the same problem, a horde of thieves that immediately descend on their cargo. It's a well-oiled operation. As accomplices wait for the coal, the smaller kids have thrown off the truck. It takes agility and guts to raid the vehicles. Women and children all take part. The grabbing at the Curse Undermine has become a family business. Some 500 families live just below the embankment. Many have been here for generations. At some point, they all left their villages to live here. Now stealing coal is their only livelihood. This kid Balboa was born here 13 years ago. He's the only child of grabber parents and has grown up knowing little else. He's now at the head of a small business and the family's breadwinner. बस हम गिराने वाला हम दो हैं वो दोनों ढोने वाला इसलिए रखवाली करते हो
Authorities at the mine gave up trying to stop the grabbers a long time ago. There are simply too many of them. And the amount of coal they steal remains relatively small. It looks like Balboa and his gang will be getting away with this for years to come. करते हो पेट पालने के लिए करता हूँ सर गरीब घर का बेटा हूँ नहीं कमाऊंगा तो कहाँ जाके खाऊंगा मैं यहाँ पर बचपन से पढ़ा नहीं हूँ पढ़ने का हाथ में कलम की जगह On a good day, these kids might each earn the equivalent of about £2. शुरू से जो इनका आदत है लैंग्वेज है क्योंकि ये लोग कहीं कमाने लायक है भी नहीं ये लोग कोयला उतारेगा तब भी खाना खाएगा नहीं तो इसके बाद में तो और कोई रोज़गार तो है नहीं यहाँ पे इसीलिए ये लोग भी मजबूर होकर के कोयला उतारते हैं कोई शौक़ नहीं है कि जो कि कोयला उतार करके हम बेचें कोई साइड बिजनेस हो There is a break in the traffic and Parwan gets going, blasting along these rough dirt tracks. At this speed, only the most experienced grabbers dare raid the trucks. Banaras is the next stop, but the road ahead is vicious. A 180 miles further west, we visit the Kezia Tribe. Until a decade ago, this tribe refused to give up their nomadic lifestyle. Now they live off the land and from their livestock. The fields are full of mustard. This year's crop is particularly generous. In the village, people hang out under this tree and sample the local speciality, wheat patties cooked in cow dung. To avoid the taste of cow dung, only the inside is consumed. This is Bajnat, the village headman. To thank the gods for their good harvest and ask for greater prosperity in the future, the villagers are also making the journey to Banaras, a pilgrimage to the Ganges. This trip should take 2 days. अब बाल बच्चा कभी हम लोगों को सुरक्षित नहीं हुआ ना पढ़ाई है ना कहीं लिखाई है ना अस्पताल है ना कहीं रोड को साधन है बैजनाथ भाई आज इस साल खेती कैसे हुई आपकी इन साल खेती अब तो बढ़िया हुआ जो हुआ था तो अपन सब जन भाई लेके अपन चल के गंगा जी नहाई के कथा वार्ता करके अपने दुख तकलीफ के आज हाँ गंगा जी नहाइले में कहीं भगवान पवित्र भाई हो जाए तो खेती बाड़ी भगवान बुझने वाली है जीना खाना बढ़िया से ढंग से दुख तकलीफ हर चीज रोग दुख भी साफ होई आज पवित्र गंगा जी हरण करी As night falls, they celebrate their impending departure with a bit of music. 20 of them will travel to Banaras, using an old tractor they've hired for the trip. छातियां ते सरू जहे कद ने सोने ते सुनखे एक दूजे नाल वरद ने
Crammed into the trailer like sardines, the pilgrims will have to put up with their uncomfortable seating arrangements for 180 slow, scorching hot and exhausting miles. अब ये ट्रैक्टर मिक्टर अपने भाड़ा ये कुल अपन लगाए के चंदा लगाए कर भिलाई से फिर हम लोगन बस से जाएंगे बनारस. The hardest part lies ahead. They have to tackle a dangerous descent into the valley before heading on towards the Ganges. The dirt track is already slippery, but it's becoming more dangerous as it gets steeper. The tyres can't get any traction on this dusty track. The tractor could lose control at any moment. It's safer to get off and continue on foot, but it's hard on the women and children. It's taken 6 hours to reach the nearest town in the foothills of the valley. The first leg of their odyssey is over. They now ditch the tractor and catch a ride on a bus. This overcrowded bus will take them as far as Banaras. टिकट हम लोगन के आप लोग कितने लोग हैं? हम लोगन माला 18 और 2. The bus driver gasses it to try and make up for lost time and takes some big risks. But despite the erratic driving, Bajnat seems unperturbed. आपको ये बसों में घूमने की आदत नहीं है, डर नहीं लगता ऐसा करो? नहीं, अब तो डर नहीं लग रहा है, अब तो बढ़िया रास्ता हो गया है, अब बढ़िया मेन रास्ता पकड़ा गया है, अब डर दिक्कत नहीं, अब बढ़िया अब हम लोग पहुँच गए. He might be oblivious to the danger or just fatalistic. To Hindus, death doesn't signify the end, but the beginning of a new life. Reincarnation. Back with the truckers on the coal route, Parwan and Govind have been driving for 4 hours, and fatigue is beginning to rear its ugly head. देख रहा है यार. On the narrow roads, the hardest thing to do is overtake. The job of the assistant is vital, as he's the one who assesses the risks. छोटी रूट में बहुत सी दिक्कत है. छोटा छोटा बच्चा, गाय, भैंस, हर चीज़ से बचाना पड़ता है. अब नदी नहीं बचाइए, कहीं बाई सब में लग जाता है. बच्चे में लग गया, गाय में लग गया, या किसी जीव जंतु में लग जाने के बाद झारखंड के लोग ड्राइवर लोग को बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं. एक बार हुआ, एक बार जब हमारे साथ में फर्स्ट जब ड्राइवरी का चांस लिए तब हमने मेरे साथ में एक बार घटना घटा. गाय जो है कि अचानक दौड़ पड़ा रोड पे. फिर एक मौसम में गाड़ी थी, एक
बस मारते ब्रेक मारते जाके गाय में सट गया। तो गांव वाले हमरे पर टूट पड़े। 2-4 हाथ जमा भी दे और 1000 रुपया दंड दिए थे। जो हल्का चोट लगा हुआ था वो भगाए थे। To get away without further beating, Parwan had given up half his wages. Such incidents are common, and this part of India is well known for its high crime rates, especially at night time when bandits target the traffic with the cover of darkness. जरूर भैया, अब आगे जा करके 10-15 किलोमीटर और आगे जाएंगे, इसके बाद में गाड़ी खड़ा करके सो जाएंगे। The guys decide to pull over at a roadside cafe. The place is dilapidated, and you need a strong stomach to eat the special. बिजनेस बहुत बढ़िया था हुआ। हाँ ठीक है, 24 घंटा मिला, 24 घंटा खुला रहता है। कोयला तो बहुत तरह का रोड 24 घंटा चालू रहता है। There's a rapid turnover and the service is efficient. The staff don't have time for small talk. नहीं, क्यों पसंद नहीं है? बहुत हाथ खटाली है, रिस्क पावर जो बहुत ज़्यादा है। महसूस क्यों नहीं होगी? जब घर छोड़कर निकलेंगे तो महसूस तो नहीं होगी। महसूस तो ज़रूर होता है। 6-7 साल बिता दिए और जो है कि 2-3 साल का गाड़ी चला के छोड़ देंगे। Despite his boss's feelings, Govind's future seems to be mapped out. मेरा सपना बस गाड़ी सीखने का, मेरा शौक है गाड़ी चलाने का, इसलिए क्लासी लाइन में आया। उनके साथ में करीब 1.5-2 महीना से सीख रहे हैं, सीखना भी चाहते हैं। The guys will sleep for the night at the cafe, and tomorrow they should get to Banaras and its legendary traffic jams. The next day, Parwan and Govind and their 16 tons of coal finally arrive in Banaras. जी हाँ, खुश तो है जब जरूर, जब चूँकि मंजिल अपना पहुँच गए तो खुश तो जरूर रहेंगे। It's taken the guys 2 hours to cover the last 2 miles of their trip. The huge amount of coal from the region's mines is stockpiled here. Every day, hundreds of trucks are unloaded and the coal is then shipped all over the country. 7 बजे और जल्दी करवा दे मतवा, लेकिन हो ही कैसे? Too many trucks are already obstructing the depot. The guys face another long wait. अब देखा इतना जाम लगल है ना, अब खाली ना हो पाई। तो ऐसा करा 1-2 दिन में हम खाली करवा ले, तू जाकर नहावा के गंगा जी आइए आप। हाँ, 1-2 दिन में हम खाली करवा देते, शाम तक खाली हो जाएगी या कल खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पहली बार पहुँचे हैं ना? अच्छा, गंगा जी नहाने चलिए, नहा लीजिए। पानी बहुत ठंडी है मगर अच्छी है। पूरा गर्मी निकल जाएगा तो सारा कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक वाला पूरा सब सारा ये निकल जाएगा, गर्मी निकल जाएगी। थोड़ा सा गर्मी आ गई थी, गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। After a grueling 2-day journey by tractor and bus, the Kezia Tribe also arrived in town and decided to stay in this ashram. There are hundreds like this throughout Banaras. The pilgrims are sheltered and fed for free, along with some other guests.
आज खुशी का दिन है। सुरक्षित है, नहा लेंगे तो अपना सियान में अपना जवान सियान होंगे तो कहेंगे कि हम लोग के अधिकारी हम लोग के बाप माई ले गए गंगा स्नान करवाने का। नसीब होगा तो फिर भी आए भी करेंगे। और अब यहाँ में आए हैं तो अब खुश हैं हम लोग गंगा जी में नहाने धोने के। After many exhausting days on the road, the tribe has finally made it to their destination. Finally, they've made it to the Ganges. गंगा जी नहाने के ही के अपने एक कर्म के आए हम लोगों अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों के लिए बच्चों के लिए कोई पढ़ाई लिखाई का काम लाइन का आगे बढ़ाने के लिए। और गांव वाले के लिए गंगा जल लेके जाएंगे आप? हाँ, जल भी वो भी लेकर जाके वहाँ भी सुरक्षित करेंगे। अरे बहुत हम लोग एकदम थक जाते तो बहुत एकदम गड़बड़ रोड है। वहाँ से हिटते हिटते हम लोग थक गए एकदम। हवा ठंडी बहुत ठीक लगता है हम लोग के फुल स्वाद। The offerings are to help make their most cherished hopes come true. A big harvest, enough to feed the entire tribe.